In today's video, we are going to learn about 2 to 5 kingdom classification system. So 2 to 5 kingdom classification system. Different classification system recognize 2 to 5 kingdoms. For centuries. The living things has been classified into two kingdoms, plants and animals, right? So plants can prepare their own food from simple inorganic material and store energy. They are so autotrophs, right? Because they can prepare their own food, synthesize their own food from the inorganic material and store energy. While animals cannot synthesize their own food from simple inorganic material and they depend for their food either on autotrophs or on the decaying organic matter. So they were known as heterotrophs. अगर बैक्टीरिया को देखें तो it were included in the plants initially. So many biologists found this system satisfactory while others found it a little unworkable for many unicellular organisms like Euglena. ठीक है, they have both plant like उनमें क्लोरोफिल था तो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक द लैक ऑफ सेल वॉल उनमें ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स है एंड ऑल्सो बिकॉज इट इग्नोर्स द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोक्रियोटिक एंड द यूक्रियोटिक सेल. तो फिर 1866 में Ernest Haeckel, this guy, he proposed a third kingdom, Protista. उसने एक और kingdom propose किया, Protista, to accommodate Euglena-like organisms and bacteria. ठीक है, फिर 1937 में ई कैटन ने सजेस्ट किया डिफरेंशिएटिंग टर्म्स को. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग टर्म्स को सजेस्ट किया लाइक द प्रोकैरियोटिक. ठीक है, यूज्ड टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द eukaryotic to describe the animals and plants. Some biologists also disagree about the classification of fungi such as bread, mold, yeast, and mushroom, which resemble plants in many ways, but they are not autotrophs. Fungi are special form of heterotrophs that obtain energy and structural material by breaking down and absorbing food substances and possesses chitin as a structural component. Right? So उसके बाद 1969 में रॉबर्ट Whittaker, this person, this scientist, he relatively recently, a very recent system of classification, the five kingdom classification system was proposed by this man, Robert Whittaker. The system of classification is based on three level of cellular organization associated with the three principal mode of nutrition. वो क्या थे? First, photosynthesis. ठीक है. First, photosynthesis. Second, absorption. And third, ingestion. जो फाइव किंगडम थे उनमें जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए था प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर उनमें मोनरा को डाल दिया फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया द यूक्रियोटिक प्रीडोमिनेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा प्रोक्रियोटिक को इसमें डाल दिया यूक्रियोटिक को सॉरी सच एज यूग्लिना अमीबा राइट. उसके बाद यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर को यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर को ऑटोट्रॉप्स को बेसिकली हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड प्लांट ही में ऐड कर दिया. यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स को
फंजाई में ऐड कर दिया। फंजाई फॉर एग्जांपल मशरूम और यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स को एनिमल्स में ऐड कर दिया। ठीक है। सो इस तरह से इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड किया। अगर आप ये वाली डायग्राम में देखें तो इट्स शोइंग यू कि जो मोनरा था प्रोक्रियोटिक, इसमें डाल दिए दैट अब्जॉर्ब एंड फोटोसिंथेसाइज मोटाइल एंड नॉन मोटाइल एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्ट में यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दैट absorb, ingest, photosynthesize and can reproduce sexually and asexually. Plantae में eukaryotic multicellular that photosynthesize are non-motile and produce sexually. Then animals में eukaryotic multicellular that ingest motile and are sexual in nature. Fungi में eukaryotic multicellular absorb non-motile and reproducing sexually को add कर दिया। इसमें कुछ examples भी आपको नज़र आ रही हैं, like the mushroom, animals, plants, protists, and the monera, right? उसके बाद हम देखते हैं कि हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में चीज़ों को किस तरह से ऐड किया गया, उनकी क्या स्पेक्स थी, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी। ठीक है। अगर आप देखें तो सबसे पहले सेल टाइप पे अगर हम जाएं तो मोनरा में प्रोक्रियोटिक, प्रोटिस्टा में यूक्रियोटिक, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में यूक्रियोटिक। सेल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर, फंजाई में यूक्रियोटिक मल्टी एंड यूनिसेलुलर, प्लांटी में यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर एंड एनिमेलिया में भी मल्टी सेलुलर। सेल वॉल प्रेजेंट थी सारे मोनरा में क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्ट में कुछ में प्रेजेंट थी, कुछ में एब्सेंट थी। फंजाई में प्रेजेंट थी, प्लांटी में भी प्रेजेंट थी, बट एनिमल्स में एब्सेंट थी। न्यूट्रिशनल क्लास में ये फोटोट्रॉफिक थे, हेट्रोट्रॉफिक थे और कीमोऑटोट्रॉफिक थे, जबकि प्रोटिस्ट हेट्रोट्रॉफिक थे एंड फोटोट्रॉफिक थे। फंजाई भी हेट्रोट्रॉफिक थे, प्लांटी फोटोट्रॉफिक थे और एनिमिलिया हेट्रोट्रॉफिक थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्टिव था, इनका एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव था प्रोटिस्टा का। फंजाई का भी एब्जॉर्प्टिव था, प्लांटी का भी एब्जॉर्प्टिव था, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, राइट। एंड एनिमिलिया का इंजेस्टिव था बिकॉज दे हैव अ digestive system for performing that, right? So these are some of the characteristics of the 5 kingdom system. Then there is a quiz for you guys. So the first MCQ is that 5 kingdom classification system was proposed by Robert Whittaker, Ernest Haeckel, or Robert Brown. We know that it was proposed by Robert Whittaker. The second MCQ is that the example of fungi is mushroom, Allium cepa, or poles is mushroom, right? So this conclude our today's lesson. If you guys got any queries, ask them below and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.